Hello, I am Sonali Powar. In this lecture, we are going to see some more examples of the algorithm. In that first example, we will see sum of n given numbers. It means user will enter the n numbers and I want to find the sum of these numbers. For example, suppose user enter the 3, n is equal to 3. It means they want to do the addition of any three numbers. After that they will say that suppose I want to add 11, 22, then I will do the addition of these three numbers. Suppose user enter the 5, it means they want to do the addition of 5 numbers. So ask the user to enter the 5 numbers. uh, 5 numbers means suppose user enter the 23, 5, 10, 4. User will enter any 5 numbers, so I will do the addition of these 5 numbers. So we are try to write down the algorithm for it. Now there are the first you have to ask the user how many numbers you want to add. So what is the logic behind that? Suppose user said I want to add the three numbers. I want to add the three numbers. So take one n which will store how many numbers user want to add. Suppose n and n is equal to 3 means suppose user want to add the three numbers. So यहाँ पे मुझे क्या करना है? I will take one counter. Okay, I will take one counter. Suppose counter value is 1, then ask the user to enter the value 1 value. Next, afterwards increment the counter. Means suppose in this case, I just taken the I as a counter. I is working as a counter. I set I is equal to 1 initially. I is equal to 1 initially. So ask the user to enter the first value which you want to add. So user enter करेगा first value. उसके बाद वो enter करने के बाद I will increment the I value. Okay, so it becomes 2. So ask the user to enter the second value which they want to add. After that increment the value of I becomes 3. So now user will enter the last value, that is the third value. So here my counter I goes from 1 to 3. So this is the logic behind that. So here I just taken the 4 variables. First one is n, second is I, third is sum, and fourth one is x. Now first step is a start. In the second step I said that read n. So suppose user enter the value of n is 3, so n becomes 3. Now in the step number 3 I said that I is equal to 1 and sum is equal to 0. I is equal to 1 and sum is equal to 0 because right now I am not doing any addition. So initialize sum is equal to 0. I is equal to 1 and sum is equal to 0. After that here I am checking if I is less than equal to n. I am checking this condition because I want to add only three numbers and I is working like a counter. Now here I contains one value. 1 is a less than equal to 3. 1 जो है 3 से less है. Okay, so go to step number 5 means ये क्या जाएगा? Step number 5 को जाएगा और I said that read x. It means I am just reading the which number user want to add. Means suppose user want to add the 10. So here now the x contains the 10 value. X contains the 10 value means user enter the 10 and x becomes 10. After that what I said that sum is equal to sum plus x. तो क्या कर अभी सम में क्या कर x की वैल्यू ऐड कर. सम इज इनिशियली 0, 0 plus 10 it becomes 10. So updated value of sum is 10. उसके बाद मैंने क्या किया है i is equal to I plus 1 means I am incrementing the counter. अभी यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रीड कर दी है, अभी तू क्या कर सेकेंड वैल्यू रीड कर. सो आई जस्ट इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई. सो आई बिकम्स 2. I becomes 2. So 1 plus 1 is 2. So updated value of I is 2. After that I said that go to step number 4. अभी तूने काउंटर अपडेट किया है लेकिन वो n से लेस है क्या देख तो ही पूछ यूजर से एंटर द नेक्स्ट वैल्यू. सो यहाँ पे 2 is less than 3. So it will go to the step number 5 and ask the user to enter the next value. Now suppose user enter the value 5. So in this case x becomes 5. अभी x की वैल्यू हो जाएगी 5. जो 10 है वो उससे 5 जो है वो रिप्लेस करेगा 10 को. Now x becomes 5. So उसके बाद मैंने लिखा है in the step number 6 I said that sum is equal to sum plus x. So 10
plus 5 कर. So 10 plus 5 it becomes 15. So updated value of my sum is 15. अभी मेरा sum हो गया 15. This is my updated value. उसके बाद मैंने क्या बोला है, I is equal to I plus 1 मीन्स क्या करा, अभी ये जो काउंटर है मेरा और I की वैल्यू है वो क्या कर, इंक्रीमेंट कर. तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, 2 plus 1 it becomes 3. तो I की वैल्यू हो गई मेरी 3. उसके बाद आई सेड दैट गो टू स्टेप नंबर 4. अभी ये स्टेप नंबर 4 को चला जाएगा. स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है मैंने, आई इज लेस देन इक्वल टू एन. तो 3 इज लेस देन इक्वल टू एन मीन्स 3 इज लेस देन 3. Oh sorry, 3 is equal to 3. So condition is true, so it will go to the step number 5. और step number 5 में क्या बोलूंगी मैं, I will say that enter the next value. मीन्स अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, यूजर लास्ट वैल्यू एंटर करेगा. सपोज यूजर एंटर द 2, यूजर ने डाला 2 वैल्यू. तो अभी मेरा x क्या होगा, x चेंज होगा. सो x becomes 2. x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2. उसके बाद मैंने क्या लिखा है, i इज इक्वल x की वैल्यू हो जाएगी 2. उसके बाद इन द स्टेप नंबर 6 आई सेड दैट सम इज इक्वल टू सम प्लस x. सो व्हाट इज द सम, इट्स 15. 15 प्लस 2 इट बिकम्स 17. so updated value of my sum is 17. so sum becomes 17. उसके बाद नेक्स्ट आई सेड दैट i इज इक्वल टू आई प्लस 1. तो यहाँ पे क्या कर, अभी जो काउंटर है मेरा वो क्या कर, इंक्रीमेंट कर. सो 3 प्लस 1 कितना हुआ, इट बिकम्स 4. तो अभी i की वैल्यू हो जाएगी 4. तो ये 4 होने के बाद आई विल गो टू द स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में क्या लिखूंगी मैं, इफ i इज लेस देन इक्वल टू n. अभी ये जो 4 है वो 3 से लेस और इक्वल है क्या, नहीं है, इट इज ए ग्रेटर. सो आई विल से दैट go to step number 8. So in the step number 8 I said that print sum. So what is the sum, sum contains the 17, so it will print the 17. So it working correctly. You can check this for any numbers, means say n is equal to 5 means user want to enter the 5 numbers and after that enter the 5 numbers one by one. It is also working, it is working for the 6, 7, anything. Example is finding factors. Finding factor means, what is meant by factor, the number. Suppose I just taken one number 4. Now 4 is divisible by 1. 4 is also divisible by 2. 4 is also divisible by 4 itself. So these are the factors of 4. Here for any number is always divisible by 1 and that number itself. So suppose you said only 2, the fact, if you display the factor as a 2, then also okay. Or suppose you display 1, 2, 4, then also okay. So these are the factors of the 4. So I want to display these factors. Now user will enter any number and I want to display the factors of that number. So this program is a little bit similar to the prime number. Check step number 4. In the step number 4 what I said that if n divisible by I, then print the value. So in case of the prime number we said that if n is divisible by I, then डिस्प्ले नंबर इज नॉट प्राइम एंड गो टू द स्टॉप. यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्राइम नंबर में क्या करते हैं हम, कोई भी नंबर तुझे मिला कि जो डिविजिबल है, दैट टाइम डिस्प्ले इट इज अ नॉट प्राइम एंड स्टॉप. बट यहाँ पे क्या करना है मुझे, वो फैक्टर डिस्प्ले करना है, किससे वो डिविजिबल है वो डिस्प्ले करना है. नाउ फर्स्ट स्टेप इज अ स्टार्ट. इन दैट जस्ट एक्चुअली व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. सपोज यूजर एंटर द 4. यूजर ने क्या किया, 4 नंबर एंटर किया. तो मुझे क्या करना है, एक आई लेना है. आई विल गोज फ्रॉम 1 to 4. तो पहले क्या चेक करूंगी, ये जो 1 है 1 to 4 मीन्स यहाँ पे देयर विल बी 2 and 3. तो मैं क्या चेक करूंगी, वेदर दिस 4 इज डिविजिबल बाय 1. इफ एस देन प्रिंट द वैल्यू 1. इफ 4 इज डिविजिबल बाय 2 देन प्रिंट द वैल्यू 2. इफ 4 is divisible by 3, it is not divisible, so don't print it. Go next. If 4 is divisible by 4, then display that value. So here I will goes from 1 to 4. Means यहाँ पे अगर n 4 रहेगा, in general I will say that I will goes from 1 to n.
I कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 to n तक जाएगा, और बीच में सारे नंबर्स में चेक करूंगी whether it is divisible by that or not. Now यहाँ पे in the step number 1 I said that start. In the step number 2 I said that read n. Suppose user enter the 4. उसके बाद मैंने लिखा है in the step number 3 I initialize to 1 because I will goes from 1 to 4. It means it will goes from 1 to n. So first initialize I is equal to 1 को initialize करो. If I is n mod I is equal to 0. अभी यहाँ पे अगर मैंने 4 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है का? यस. एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1. सो जस्ट प्रिंट द वैल्यू. तो ये क्या प्रिंट करेगा? अभी 1 को प्रिंट कर देगा. उसके बाद गो टू, ये प्रिंट करने के बाद कहाँ पे जाएगा? डायरेक्टली इफ यू कंप्लीट द स्टेप नंबर 4 इट ऑटोमेटिकली गोज टू द स्टेप नंबर 5. सो प्रिंट करेगा और यहाँ पे एल्स पार्ट में नहीं जाएगा बिकॉज द if condition is true, so it will not go into the else part. It directly jump after printing, it will directly jump to the step number 5. So यहाँ पे मैंने लिखा है I is equal to I plus 1. So I मेरा हो जाएगा अभी यहाँ पे 2. So after that I will check whether my incremented I is less than equal to n because I want to stop when I becomes n. जब मेरा I will be greater than n. So I want to stop at that place. So यहाँ पे इसके लिए चेकिंग की है. So 1 is less than equal to n means 1 is less than 4. So it will go to the step number 4. In the step number 4 I said that 4 is divisible by 2. Yes, this condition is true. So it will print the 2. उसके बाद I will increment the value of I. So यहाँ पे अभी I हो जाएगा 3. So I am checking in the step number 6. ये जो मेरा I है it is a less than 4 means 3 is less than 4. Yes, condition is true. So again it will go to the step number 4. and यहाँ पे क्या चेक करूंगी? अभी 4 जो है वो 3 से डिविजिबल है? No, it is not divisible by 4. So यहाँ पे क्या होती है? कंडीशन जो है वो false हो जाती है. So it will goes into the else part means it will not print that value. It will go at step number 5 and here I just written the increment the value of I. So अभी यहाँ पे मेरा I क्या होगा? 3 plus 1. So I becomes 4. I की वैल्यू हो जाएगी 4. उसके बाद I जो है मीन्स 4 इज लेस देन इक्वल टू 4. 4 से इक्वल रहता है. इट इज नॉट लेस बट इट इज इक्वल. सो इट विल दिस कंडीशन इज ट्रू एंड इट विल गो टू द स्टेप नंबर 4. इन द स्टेप नंबर 4 I said that 4 is divisible by 4. Yes, condition is true. So it will print the value 4. ये क्या प्रिंट करेगा? 4 वैल्यू प्रिंट कर देगा. और यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट करने के लिए I की वैल्यू. सो I becomes, अभी I की वैल्यू है 4. So it will becomes 5. 4 plus 1 it is a 5. So it will make value of I as 5. So उसके बाद in the step number 6 I will check whether 5 is less than equal to 4. So here the condition is false. In the step number 6 the condition is false. So it will go to the step number 7. In the step number 7 I return the stop. So it will stop. Now I will get the correct answer means the factors of the 4 is 1, 2, 4. So this is the way it works. You can check this number for you can check this algorithm for any numbers like 5, 6, 7 or 85, 87 like that also you can check. Thank you very much.